Recording in progress. Hello everyone. Good afternoon and I hope you're having a great day. Now that cat ho gaya, 2 दिन चले गए, it's time to actually start getting back into action. See, you must be two kind of students. एक जिनका cat बहुत अच्छा गया and the other one जिनका cat नहीं अच्छा गया. There are only two. जिनका बहुत अच्छा गया to tell you it's not necessary that cat में फिर भी admission मिलेगा and जिनका नहीं अच्छा गया to tell you it's not the end. You have a lot of exams. CAT is just one of the probably 13 exams that India has for MBA. So there's nothing to worry about. 13 में से थोड़ी अच्छी है, थोड़ी अच्छी नहीं है. There are a lot of exams that you can take, and that's what I'm here to tell you. I won't waste a lot of time. I'll just straight away get with the video. Chalo. So yeah, I'm here to tell you that now is the time that you actually start preparing for the other exams. If not preparing, at least you should know everything about the other exams so that you can make a decision as to मुझे एग्जाम लेनी है नहीं लेनी क्या करना है everything. So yeah, let's go. So basically I'll first tell you the timeline that you should be following. Exams छोड़ो, you should be following. सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करो. एज आई सेड जस्ट माय प्रीवियस वीडियो दैट डिसाइड तुम्हें कौन सी एग्जाम लेनी है, विच एग्जाम इज बेनिफिशियल टू यू. मतलब फॉर एग्जांपल समझो अगर मुझे फाइनेंस करना है तो मैं टेस्टनेट नहीं दूंगा. टेस्टनेट इज टाटा इंस्टीट्यूट, इट इज ओनली फॉर एचआर. देयर इज नो यूज. if i am uh, if I am a commerce student, I won't go to a college like an IIT which will accept only engineers. An IIT for an MBA basically. IIT के MBA में सिर्फ engineers allowed होते हैं, बाकी लोग allowed नहीं होते. So accordingly make sure that you are choosing your colleges, choosing your exams accordingly. So उस हिसाब से प्लान करो. So it will be a 4-step process, very simple. Set your priorities, देखो कौन सी एग्जाम्स लेनी है. Register yourself. Preparation अब तक हुआ नहीं हुआ, register yourself already. There are a few deadlines which are even today and very near in the future also. And step 3, streamline your preparation. देखो कि कौन सी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. I'll tell everything in this video, just wait for 2 or 3 minutes. And finally step 4, take the exam, bloody ace it and get into the college of your dreams. So that is the entire path that I've built for you. That's the path that you should be following. And don't worry, ज़्यादा कुछ आजू बाजू सोच के फायदा नहीं है. चलो. So first I'm taking Snap purely because इसका deadline है आज. Today is the last day that you can apply for Snap. That is 30th November. I'm recording this on 30th November only. So 30th November. Now Snap का बहुत फंडा सिंपल है. Snap 3 बार होता है. 3 times you can take 3 slots में होती है. That is 19 December को एक slot है 2 से 2 बजे. बाद में there is 8th January को 1 slot and there is 16th January को एक slot. So you must understand, Snap सिर्फ 1 घंटे की एग्जाम. It's not a very long exam unlike CAT or CAT जो 2-2.5 घंटा खींचती है. It's not like that. Snap में the only thing is that कम questions, कम time. Snap is very much like CAT. The that is why our course is very helpful for Snap. But yeah, regardless, Snap is very much like CVT जहाँ पे time and accuracy दोनों तुम्हें manage करना पड़ेगा. You don't have to get 60 marks. You understand, Snap में 60 marks लगे कुछ फायदा नहीं है क्योंकि किसी को 60 marks आते नहीं है. You'll be an idiot if you're aiming for 60. अंडरस्टैंड कि कौन से पार्ट्स में से तुम टाइम निकाल सकते हो. द टॉपिक्स इन इट आर जनरल इंग्लिश, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, वही अपना सीईटी कैट के सारे टॉपिक्स. एनालिटिक्स एंड लॉजिक, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. एंड फाइनली क्वांटिटेटिव. एनालिटिकल मतलब वो थोड़ा दोनों के बीच में आ जाता है. एंड क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी. तो रिस्पेक्टिवली इसमें क्वेश्चंस है 15, 25 और 20. Total it comes up to 60 and you'll have 60 minutes. I suggest CAT is the exam that you should be taking. अगर समझो तुमने अभी जो CAT दिया, CAT में you were getting somewhere around 80 to 85 percentile in your CAT ka mocks. That is when you should be taking your Snap, because you'll be in a good position to actually take the Snap and score well enough to get into the top 2 colleges. That is the SIBM Pune and SCM HRD Pune. According to me, बाकी colleges जाके फायदा नहीं है. If you are purely looking from a ROI perspective, then I recommend that go only to the top 2 colleges from SIBM. Now ZAT a hell of a exam. CAT जिन लोगों को टफ लगी ना, ZAT उसका बाप है. ZAT is much more difficult than CAT. ZAT का overall level ही एकदम अलग है. But the good thing about ZAT is that obviously इसके कट ऑफ्स भी कम होते हैं because सबको कम मार्क्स आते हैं, किसी को इतने ज्यादा मार्क्स आते ही नहीं है. Now ZAT is a very particularly different exam purely because it is one section that is decision making. That is here. Just a minute, let me. Yeah, यहाँ पे decision making देखो ZAT का. ये सिर्फ ZAT में है, बाकी किसी में नहीं है.
sorry what this, थोड़ा मेरा ड्राइंग का लोचा है. So yeah, decision making is something that only ZAT has, and you must not be worried about. This is something, देखो, if you are just normally good with कैसे सोचना है, then decision making is a very good thing for you. This is a very good section in ZAT because it literally tells them what is your management potential. Because as a manager, you won't be just following orders; you'll be taking decisions, and that is why decision making is very, very, very important. They are having it as a part of their entrance exam, which is a very, very great deal. I believe बाकी सारी colleges को भी ये लेके आना चाहिए. There is one other exam which has a very similar thing. We will see that later in the video. So yeah, बाकी के तीन sections, normal, verbal ability, quantitative data interpretation and general knowledge. General knowledge is something जो थोड़ी exams में होती है, थोड़े exams में नहीं होता. I will make a separate video on which type of general knowledge should you be preparing. कि कौन सी exams के लिए कौन सी kind of general knowledge is more preferable, कितने time तक का देखना है, current affairs, static, I'll explain everything. जनरल नॉलेज के लिए 15 मिनट मोर देन एनफ होता है बिकॉज इट्स अ बाइनरी थिंग. मुझे या तो आता है, मुझे या तो नहीं आता है. यू कांट बी लाइक अरे मून पे जाने वाले पहले वुमेन कौन थी, शायद ये है, शायद ये है. नहीं, यू आइदर नो इट और यू डोंट नो इट. सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट. वो चार ऑप्शंस में तुम गेस नहीं कर पाओगे बिकॉज द नेम्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट. So yeah, ZAT में there is a negative marking that you must be very careful about. जैसे CAT में था वैसे ही हर 4 मार्क, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है एंड हर एक रॉन्ग क्वेश्चन का 0.25 नेगेटिव मार्क्स है. So you must make sure that in ZAT, just like in CAT, you will be marking only the questions that you know 100% of. Don't mark flukes in ZAT. ZAT में literally जगह नहीं है flukes के लिए, and it is not an exam that you want to take lightly. The registration date for ZAT again is today. So if you are, I would recommend that if you're already scoring about 90% in your CAT, then go in for ZAT. The two colleges after ZAT that I would suggest that you go are obviously XLRI and XIM Bhubaneswar. XLRI Jamshedpur hai, it is amazing for HR. It is probably the best college in the country for HR, alongside TIS. And XLRI is also good for marketing. It's also good for business management because business management course बहुत अच्छा है. So that is something that you can go for. And yeah, also the last thing that is something that wasn't there long ago but अभी नया नया आया है. Candidates can leave only 8 questions unattempted. तुम जितने भी क्वेश्चंस है ना 100 में से you have to attempt 92 questions. So इसीलिए you must be very very sure because अगर तुम्हें नहीं आता है, if you aren't prepared, you will have to mark 92 questions. उसमें अगर तुमने गलत मार्क किया तो नेगेटिव मार्किंग हुआ, तुम्हारे मार्क्स और घटेंगे, तुम्हारे चांसेस जाने के और कम हो जाएंगे. And with every negative result that you get, every bad result you get, your confidence goes down. Don't do that to yourself. Take that if you are prepared. Next, MyCAT. Now this is the exam that I really find very very interesting because of the psychometric test. So ZAT में कैसा है, decision making, right? Where you are put in a situation and you have to take decisions. Psychometric is something very much similar, but there will be no business decisions. You will have real life decisions. Like for example, I remember when I taken the MyCAT, you have questions like if you are in an office and there are people and आग लग गई है suddenly and you see that one of the employees is waiting there और बीच में आग लगी हुई है, what will you do? And then there are 5 options, 5 scenarios जहाँ पे तुम क्या act करोगे. The worst thing that you can do in a psychometric test is to act all goody goody two shoes. No, you can't be मैं मसीहा बन के मैं उसको बचाने जाऊंगा, नहीं. You can be that, but अगर तुम्हारे सारे psychometric answers उसी हिसाब से है तो now understand these people are very smart when they make such tests. They have special professional psychologists who make the test. So you must understand कि अगर उनको जरा सी भी discrepancy दिखी, they will kick you out. They want people, उनको एक तरीके पर लोग नहीं चाहिए, उनको चाहिए लोग जो एक तरीके से सोचते हैं. अच्छा तरीका, बुरा तरीका, selfish या people oriented, absolutely fine. They don't have a problem with that, but they want someone who is stable in their mind. मतलब उनके decisions same line में होंगे. अगर person introspective, मतलब sorry not introspective, but if the person looks inside always, अगर वो अपना फायदा देखता है तो कंटिन्यूसली ऐसा लगना चाहिए कि वो बंदा अपना फायदा देख रहा है. एंड अगर वो बंदा दूसरे का फायदा देख रहा है और ऑन वॉट एवर लेवल दैट इज बिटवीन दोस 5 ऑप्शंस होते हैं, ही मस्ट बी कंटिन्यूसली लाइक दैट. So that is when you must understand, have a good flow, write what you will honestly do, and that is what the psychometric test will help you out with. Along with that, descriptive is something that MyCAT does, that also GMAT does. So that's something that they have taken from GMAT. Descriptive मतलब तुम्हें literally एक so I remember हमें 4 इमेजेस दिए थे, रैंडम इमेजेस. हमें उनके बेसिस पे एक स्टोरी बनानी थी अबाउट 400 वर्ड्स की.
and we got 25 minutes for it, and immediately वहाँ पे बैठे बैठे story बनाना is difficult. The better your story, the better your overall comprehension skills, that is when you will ace your MyCat. So you will most commonly see that MyCat में जाने वाले लोगों की English बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. You really need to work on your communication skills, your written skills, and your overall comprehension skills. I'll tell you that how Crackabilities can also help you out with that. And MyCat 16 जनवरी को उसकी registration deadline है. पहला MyCat अभी आ रहा है. MyCat 2 बार होगा, एक दिसंबर में, एक जनवरी एंड में. दिसंबर वाला अभी है, एंड जनवरी एंड के लिए यू कैन रजिस्टर नाउ. दिसंबर वाले का रजिस्ट्रेशन चला गया है. जनवरी एंड ऑनेस्टली देयर इज नो डिफरेंस. तुम ये लोगे वो लोगे, कोई कुछ डिफिकल्ट इजी नहीं होता है. देयर इज नो डिफरेंस. दे आर ऑल मेड एट द सेम लेवल बिकॉज क्वेश्चंस का इतना सारा लॉट है उनके पास. सो इट डज नॉट मैटर टू देम कि तुम लोग क्या डिफिकल्टी सोच के जाओगे क्या डिफिकल्टी आ जाएगी. इट डज नॉट मैटर टू देम. इसमें भी जीके का सेक्शन है दैट यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट. एंड डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग आल्सो इज अनदर टॉपिक जहां पे तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. यू हैव टू जस्ट डू व्हाट यू विल डू बाय योरसेल्फ. तो तुम्हें जितना हो सके उतना ऑनेस्ट रहना है, एंड ऑनेस्टी के हिसाब से तुम्हें जवाब देना है. A little bit of logical reasoning will be really helpful if you are studying. Verbal ability is a little bit difficult in MyCat, so be very careful. Now TISNET and TISMAT, ये दो एग्जाम्स है TIS के लिए, दैट इज स्टार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज. इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है MAHR, so that is something that should be aiming for. अगर तुम्हें HR करना है then literally this is one of the best colleges in the entire country that you can go to, purely because इनका return on investment is probably the best in the country. Like I can literally tell you hands down, इनका return on investment is better than probably even JBR in this, because इतनी कम फीस है, इतने अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं. एंड HR के लिए तो ये जगह भाई भगवान है. सो या रजिस्ट्रेशन डेडलाइन Jan 22 में जनरली होता है. सो Jan Feb समझ के चलो. अभी तक ऑफिशियली उन्होंने डेट नहीं निकाली, दैट इज व्हाई आई रिटन Jan Feb. एंड फाइनली एग्जाम डेट 2nd और 3rd वीक ऑफ फरवरी में होता है. सो अप्रोक्सीमेटली CET के एक महीना पहले. इसमें भी टॉपिक्स है जनरल अवेयरनेस दैट इज जीके, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. नाउ इसमें भी कौन सी टाइप का जीके होता है, आई सून बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट कि इसमें कौन सी टाइप का जीके विल हेल्प यू आउट, बिकॉज ऑब्वियसली हर एग्जाम में, बिकॉज वो लोग हर अलग अलग चीज टेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, जीके सेम नहीं होगा. सो वन सजेशन दैट आई कैन गिव यू, अगर तुम्हें टेस्टनेट क्लियर करना है right now you should already be reading a newspaper. And finally TISNET की बात हुई, and TISMAT is a little different. TISMAT में जीके पे इतना एम्फेसिस नहीं है, उसमें ज्यादातर मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग is what comes into play. So you must have a really good hold over management related decision making. Then CMAT. CMAT honestly अब तक delayed है. We don't know कि CMAT कब होने वाला है. Tentatively Feb में होना चाहिए, बट ऑनेस्टली अब तक कुछ ऑन पेपर हमें नहीं मिला है. CMAT actually is a very easy exam, ज़्यादा इसमें टेंशन है नहीं. There are 2 kinds of CMAT, so not exactly 2 kinds, but there is one optional subject in CMAT, that is innovation and entrepreneurship. Now this is something that has come up very new. ये पुरानी चीज नहीं है, ये बहुत नई चीज है, लास्ट ईयर ही आई थी. So जो 4 सेक्शन है वो तो तुम्हें पता होंगे, that is English, quantitative, logic and general awareness, that is GK. Innovation and entrepreneurship is basically you have to take decisions based on a business, use your business intellect, use your management decision making to give an answer. अगर तुमने वो सिलेक्ट किया तो तुम्हें 25 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, बिकॉज उसके क्वेश्चंस भी 25 है. On an average, I would say that CMAT is not a very difficult exam. The only thing about CMAT is, अगर तुम्हें CMAT के through JBIMS चाहिए, you have to be literally in the top 5. Otherwise, it is very unlikely. So top 5 में आओ CMAT में, and you very well might get JBIMS. So yeah, that's one thing. That is the major reason why most people take the CMAT. Also, a few good other colleges are there, but I wouldn't call them all India top 10. I would call them just all India top 20 or top 25. So make the decision accordingly. CMAT में पहला देखो, first of all, the only difference that you'll find is that, sorry, the only good thing that you'll find is that CMAT में 100 questions और 3 hours है. I have known no one जिसने 3 घंटा लगाया पेपर सॉल्व करने के लिए. CMAT इतना इजी होता है, सबका 1.5-2 घंटे में सॉल्व हो जाता है. So if you are prepared well enough, then CMAT is something that you can very well do. CET का प्रिपरेशन कर रहे हो, CMAT का प्रिपरेशन संभल जाएगा, सिर्फ जीके करना है एक्स्ट्रा. एंड CET तो ऑब्वियसली सबको पता ही है कि CET का क्या सीन है.
अभी तक उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, so I have refrained from actually making a video on it. For all of these exams, I'm pretty sure that the Krakatoas will test course will be very helpful. I will really help you out with one video on what the Krakatoas course entails, everything that it has, हम कौन सी चीजों में help करते हैं. But one thing that you can rest assured is our course is literally going to help you out with almost all of these exams. So that's it, and that's all I wanted to say. Now there is just 2 more minutes that I would take. Make sure that you guys are not getting depressed over CAT कैसा भी गया. You just saw that बहुत सारी exams है जो literally अभी आ रही है. And also don't make sure that तुम जोश में सारी exams दे देते हो, because it's a costly affair. तुम आराम से on an average इंसान जो सारी एग्जाम्स देते हैं वो 15-20 हजार का खर्चा कर बैठता है, which is absolutely useless. Don't do that. Take 3-4 exams that you can crack, take 3-4 exams that you can get into, and take 3-4 exams only which will literally open your doors to the top colleges of India. Otherwise there is no use taking the exam. Okay, so guys, that's it. I hope you really like the video, and if you have anything you can always contact us. Bye guys.